Hey everyone, I hope you're able to see me and hear me clearly. तो आज का टॉपिक है डिवोर्स अंडर हिंदू लॉ पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिल्ली जुडिशरी, यूपी एंड हरियाणा। इन दोनों में फैमिली लॉ आता है और हिंदू मैरिज एक्ट आता है एंड डिवोर्स लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। This is a little background about me. I am Unnati Srivastav. I have done my master's in law from NLU Delhi in 2020. I got AIR 2 in LA 2019 and also I cleared the Supreme Court clerkship with AIR 18. I've also cleared NET in 2020 itself. I've also faced the interview of UP Judiciary and written the mains for Delhi and Rajasthan Judiciary. This is my code Unnati Live. Whenever you go to Unacademy app, and you must go to Unacademy app for there are so many features that you can avail there. So if you subscribe to anything, even if you unlock a free plan, you can use my code that is Unnati Live. Okay. Before we start the session, please like the session as well as share it with your friends. जिसको आपको लगता है कि it can be useful for them. Please press the bell icon so that you do not miss any notifications and subscribe to the channel. Okay, so that you actually get all the notifications of all the lectures that we are taking here. So on Unacademy, we have an entire dedicated team of educators who are helping you in cracking PCS J. I hope सबको पता है राजस्थान जुडिशरी और हरियाणा जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है। सो अप्लाई फॉर राजस्थान बिकॉज इसके फॉर्म्स निकल गए हैं और इसकी डेट चल रही है अभी अप्लाई करने की। हरियाणा तो वी हैव फिल्ड इन मार्च एंड वी आर जस्ट होपिंग फॉर द एग्जाम टू हैपन एनी टाइम सून। फाइन। When you come to Unacademy, okay, you must download the app for there are so many reasons that it is so much better than YouTube. You will not be so distracted. You will actually able to compete with so many people and actually get a rank when you take polls. We have free special live classes in which we conduct polls when we go for MCQs and question answer rounds. So and we also have doubt clearing sessions on Unacademy app. So you must visit Unacademy app. These are the subjects that we take. I take free special live classes. When I say free special live classes, these are classes free of cost as we have on YouTube. So I teach Indian Contract Act on Monday. On Unacademy, I teach constitutional law on Saturday. The entire syllabus that is needed for you to complete for judiciary, okay, I teach all these subjects pura in its entirety, comprehensive coverage of syllabus. There are anyway recorded videos that you can go and see. You'll get an idea that how I am dealing with these subjects. So I take CRPC on Sunday, Indian Evidence Act on Tuesday, okay, and IPC on Thursday. Fine. Soon we will be beginning with local laws of Rajasthan. Whosoever is preparing, let me tell you that local laws of Rajasthan is like 50% of the syllabus. So you have to complete this if you want to clear prelims, mains, as well as the interview. Fine, you want to become a judge in Rajasthan. You just can't leave the local laws. They are so important. Okay, this is like the very important thing that I want to talk about. This is the special class features, okay. So when you come on the app, you can go to the Play Store and you can download Unacademy app. We get interactive live classes. There's better interaction when you are in a class because you are not distracted and the teacher is also focusing on the class, as well as we have a chat box where you can ask questions. So we can have real-time discussions. You can post your questions, you can post pictures, screenshots to which I can answer. So when you come to a live class, this is what you get. You, as I've already discussed, there are polls where you not only
get a better understanding of topics, but you also understand who is performing better and how much you need to improve. You can raise a hand and ask a question. You will get notifications for all the classes that and any, suppose you follow me, so you will get notifications of all my classes. One of the very good features that Unacademy has is you can download the PDFs that we have, like we also put it on YouTube, so you can download those PDFs and you're taking a class on Unacademy. And of course, the learning is anytime, anywhere. You can watch the live classes. I would say that you should come to the live class because that's a more motivating way to study. But you can also watch the recorded lessons. You can just follow your educator and you can watch all their lessons. Okay. Then we have, I've already discussed this. I have already told you, you can go and follow me and watch my, I have dedicated one entire class on understanding the structure of the subject, like what you need to study and what you need not study. And that is very, very important for clearing any exam. So, and then we have live tests and quizzes. We do polls, which is super interesting. Okay. These are the batches that are going on right now. Mock tests. One thing that I am a fan of, once you start preparing, this should be a part of your daily schedule. You should do it like twice a week maybe. So you should attend all these mock tests that are available. And one of the best things that we have is there is detailed analysis of these mock tests, whatever you take. Okay, whatever you do in the mock test, you can come for an analysis every Saturday, Sunday. And I am telling you, it is so very important for your preparation that you go for a detailed analysis as well of a mock test. Okay, these are the subscriptions available. Fine, you can use my code, that is UNNATILIVE, as I've already told you. Fine. Now one more thing, just this is the channel that you're watching me on, that is Unacademy Judiciary. So just follow this, like this, subscribe to this. And this is the Telegram channel that you must become a member of, because a lot of things keep going, a lot of information is shared there. Chalo, let's start the topic. What's on table for today? Iske pehle let me tell you, divorce law जो हमने part 1 किया था, उसमें we have already completed 13.1 and 13.2. ठीक है, ये है fault based ground. I'm just revising so that आपको वापस से you come in sync with what is happening. ये fault based theory था जिसमें there are 8 grounds mentioned on the basis of which husband and wife can seek divorce, and यहाँ पे 4 grounds mentioned थे. Okay, जिसमें only wife can seek the divorce. If you remember the session, just type in the comment section so that I know कि आपको ये याद है and you do not have any doubts from here, so I can proceed with this. And you can always go back to that video and watch it if you haven't, because that will complete the entire topic for you. And let me tell you, it's a mains ka topic as well as a prelims ka topic, and it's a very dynamic, evolving topic, because is pe Supreme Court is constantly working on this, so they keep bringing new laws, they keep changing positions in law with respect to divorce. That is what we are going to talk about today. Fine. Chalo, let's begin with 13B. Now when we talk about 13B, 13B is divorce by mutual consent. Okay. अब ये तो bare act है, this you can read, I will also read it with you, but there are 3 grounds जिस पे आपको डिवोर्स मिलेगा म्यूचुअल कंसेंट पे. ठीक है, पहला है पार्टीज हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन अ ईयर. ओके, या फॉर एटलीस्ट अ ईयर शुड बी द लाइन, फॉर एटलीस्ट अ ईयर. अच्छा, ये जो लिविंग सेपरेटली है, इसका जरूरी नहीं है मतलब हो फिजिकल सेपरेशन. ठीक है,
फिजिकल सेपरेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेपरेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट फुलफिलिंग योर मैरिटल ऑब्लिगेशन, यू हैव डिसाइडेड दैट आप एक दूसरे के टुवर्ड्स कोई मैरिटल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करेंगे। सो मे बी आप एक ही घर में रहते हो बट यू आर नॉट बिहेविंग लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, सो दैट्स व्हेन योर separation thing comes into being. Okay, so you understand that living separately is not a criteria. Now second, that they have not been able to live together. Now this is very subjective, right? मतलब कि उनके बीच में इतने डिसअग्रीमेंट्स हैं या फिर उनकी मैरिज इस पोजीशन पे जा चुकी है कि वो एक साथ नहीं रह सकते एंड देयर इज नो कमिंग बैक ऑल्सो, ठीक है। सो दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड कि दे कांट लिव टुगेदर एंड हेंस दे आर सीकिंग म्यूचुअल डिवोर्स। ओके, एंड वही जो मैंने आपको बताया, दे हैव म्यूचुअली अग्रीड दैट द मैरिज शुड एंड। ये जो है, ये जो मैंने आपको बताया, ये आपके 13B क्लॉज 1 में लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ पिटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में कि कहाँ पे पिटिशन डाली जाती है डिवोर्स की, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, प्रैक्टिकली वो फैमिली कोर्ट होता है, ठीक है। आई होप सबको पता है कि अब फैमिली कोर्ट्स को अलग बना दिया गया है टू डील विथ फैमिली इश्यूज। All right. So, to the district court by both the parties to a marriage together. Okay. Yashika, yeah, I've just begun. 3:10 पे started discussing the topic. Okay. तो ये अभी start हुआ है, 13B1 we are doing. Okay. So, by both the parties to a marriage together, whether such marriage was solemnized before or after the commencement of the marriage laws. Good afternoon, Vanya. On the ground that they have been अब ये देखो यहाँ पे ground start हो गए, जो मैंने आपको 3 grounds बताए हैं। On the ground that they have been living separately for a period of 1 or more and that they have not been able to live together. This is the second ground. This was the first one, that they have mutually agreed that the marriage should be dissolved. Right? ये तीसरा ground है। अब यहाँ चलते हैं, इसमें हुआ है इनोवेशन। इसमें आता है आपका एक लैंडमार्क जजमेंट जो क्लॉज 2 बात करता है। क्लॉज 2 बेसिकली इन शॉर्ट बात करता है कूलिंग ऑफ पीरियड की, ठीक है। ये एक 6 महीने का पीरियड होता है, 6 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड not earlier than 6 months after the date of the presentation of the period referred to in subsection 1 and not later than 18 months after the said date. If the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall, I hope you guys have your bare acts with you, on being satisfied after hearing the parties and after making such inquiry as it thinks fit, that a marriage has been solemnized and that the averments in the petition are true, pass a decree of divorce declaring the marriage to be dissolved with effect from the date of the decree. Now, इसमें एक तो मैंने आपको बता दिया 6 months का कूलिंग ऑफ पीरियड। इसको समझते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसको समझते हैं कि ये लोग कहना क्या चाहते हैं। सो सी, यहाँ पे आती है डिवोर्स पिटिशन, लिखी होती है, सेम ग्राउंड्स एक्सप्लेन किए जाते हैं कि हम साथ नहीं रह पाते, हम 1 साल से ज्यादा एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं और वी वांट म्यूचुअली कि मैरिज वो हो जाए। अब देखो, बेयर एक्ट ये कहती है कि इन दोनों के बीच में 18 मंथ्स का वो होना चाहिए डिफरेंस, यहां से डिवोर्स पिटिशन से लेके सेकेंड मोशन तक। तो 6 महीने तो यहां निकल गए, विच इज योर कूलिंग ऑफ पीरियड, राइट। और ये पीरियड हो गया 12 महीने का, ओके। And this entire period should be 18 months. I hope this is clear to everybody. ठीक है? So this we have understood
that this is how the petition for divorce is filed. Fine. अब मूव ऑन करते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड पे. ठीक है, तो ये जो 6 months का कूलिंग ऑफ पीरियड है, इस पे इसको अब वेव ऑफ करने का राइट है. ठीक है, you can waive off this period now and anybody can waive off. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी वेव ऑफ कर सकता है. ये राइट देती है आपको, मतलब ये एक केस लॉ से आया है. सो दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट व्हेन इट कम्स टू वेविंग ऑफ कूलिंग ऑफ पीरियड. ठीक है, इसको समझते हैं. अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2017. इस केस से आपको ये समझ में आएगा कि वेव ऑफ क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द नीड टू वेव ऑफ दिस पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है, सो ये बहुत पुराना केस नहीं है, दिस इज 2017 का जजमेंट. ठीक है, इसके फैक्ट्स को समझते हैं. आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ. सो 1994 में these two people got married to each other. Okay, marriage happened in 1994 and 2 children were born out of this wedlock in 1995 and in 2003 another one. Okay, फिर क्या हुआ, इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ. ठीक है, कुछ भी मैरिटल डिस्प्यूट्स हुआ और ये लोग सेपरेटली रहने लगे. ओके, 2008 से. फाइन. उसके बाद इनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो सेटलमेंट क्या था, which happened in 2017. जस्ट इमेजिन, 2008 के बाद 2017 में, मतलब सेपरेटली दे स्टार्ट लिविंग टुगेदर इन 2008 एंड 2017 में जाके इनके बीच में सेटलमेंट हुआ. एंड दे आल्सो डिसाइडेड दैट वी विल फाइल फॉर divorce by mutual consent. Okay, fine. So इसमें जो सेटलमेंट हुआ था वो मैं I'll just let you know, वो लिखा भी है, you can read. 2.75 करोड़ की एलिमनी वाइफ को दी हस्बैंड ने एंड कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन वाज विद हस्बैंड. ठीक है, तो इस केस में एपेलेंट जो थे वो हस्बैंड थे. Okay, and respondent was wife. Fine. Now, इसका इन्होंने सिविल सूट डाला इन 30,000 फैमिली कोर्ट दिल्ली. ठीक है, अब इसमें इन्होंने ये बोला कि हमें ये जो 6 months का पीरियड है ये वेव ऑफ करना है. And they had a very valid ground. ठीक है, क्या ग्राउंड था उनके पास, हम 8 साल से अलग रह रहे हैं. We've been living separately for 8 years now, right? So जब हम 8 years से अलग रह रहे हैं तो you realize that 13B 1 की जो रिक्वायरमेंट है कि 1 year सेपरेटली रहना है डिवोर्स की पिटिशन डालने के पहले, और 13B 2 की जो रिक्वायरमेंट है कि 6 months अलग रहना है, मतलब 6 months का कूलिंग ऑफ पीरियड आपको क्रॉस करना है, वो तो ये लोग ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, राइट? तो ये जो पूरा सेक्शन है यही रिडंडेंट हो जाता है, इसकी कंडीशंस रिडंडेंट हो जाती हैं आपके लिए, राइट? तो इसमें फिर दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट और ये 2 इश्यूज बनाए गए. कोर्ट ने बोला कि क्या हम अपनी 142 की आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल करके क्या हम इसे वेव ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, एक तो ये पूछा. दूसरा इन्होंने ये पूछा कि क्या ये जो पीरियड है ये मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है? ठीक है, जो 6 months का पीरियड है. लैंग्वेज से देखा जाए, सेक्शन में लिखा है तो आपको लगेगा कि मैंडेटरी है, बट लैंग्वेज इतनी भी क्लियर नहीं है. ठीक है, तो इसमें कोर्ट ने क्या बोला, 142 के रिस्पेक्ट में बोला कि हम नहीं कर सकते, 142 में वेव ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि 142 में किसी को आप कोई चीज स्टैट्यूटरी प्रोविजन है. ठीक है, तो जो 142 की हमारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है उसको हम ऐसी चीजों में अप्लाई नहीं कर सकते कि ये
हम किसी ऑल टुगेदर स्टैट्यूट को बदल देंगे, क्योंकि 142 की पावर किसी स्टैट्यूट के कॉन्ट्रवेंशन में यूज नहीं की जा सकती, ठीक है। तो दे सेड नो दैट वी कांट यूज 142. Then they answered this question, and in this they said that this period is directory. This is not mandatory. Fine. ये mandatory नहीं है। अब ये इन्होंने कुछ 5 एक्चुअली दे गेव 5 कंडीशंस कि आगे फ्यूचर में अगर इसको आप प्रेसिडेंट बना के यूज करते हो तो ये कैसे किस बेसिस पे कोई भी कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है 6 मंथ्स का पीरियड, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सो द फर्स्ट थिंग दे सेड वाज व्हाट आई टोल्ड यू कि 13B1 का पीरियड और 13B2 का पीरियड अगर पार्टीज एग्जॉस्ट कर चुकी हो, ठीक है, जो कि था 1 ईयर एंड 6 मंथ्स, राइट। दूसरा, अगर मीडिएशन और कंसिलिएशंस फेल हो चुके हैं, बहुत सारे मीडिएशन कंसिलिएशन, इस केस में बहुत सारे मीडिएशंस और कंसिलिएशंस हुए थे जो फेल हो चुके थे, तो फिर देयर इज नो पॉइंट मेकिंग देम go for the 6 months cool off period just because it is written in a statutory provision, okay। उसके बाद अगर इन्होंने सेटलमेंट्स कर लिए हैं, जैसे कि इस केस में हो गया था, there was a 2.75 करोड़ का alimony and custody as well, right, children की वो डिसाइड कर ली थी उन लोगों ने, and the waiting period will only create, like it will prolong their agony, okay। In that case there is no point of this 6 months cooling off period, and the waiver application, तो इन्होंने ये बोला था, the waiver application can be filed 1 week after the first motion giving reasons for the prayer for waiver, ठीक है। So I hope this case is clear to everybody। इसमें यही हुआ था कि जो इसमें मेन चीज हेल्प की गई थी, that the 6 months period which is mentioned in 13B2 is डायरेक्टरी। ये आपसे कहीं भी पूछा जा सकता है, ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स क्विकली रीड 13(1)A हिंदू मैरिज एक्ट के। ये भी आपको 2 ग्राउंड्स देते हैं, दीज आर नथिंग, दीज आर नॉट फॉल्ट बेस्ड ग्राउंड्स, दीज आर जस्ट नॉर्मल ग्राउंड्स दैट वी हैव। सो इसको पढ़ते हैं। Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may also present a petition for the dissolution of the marriage by a decree of divorce on the ground. ये self explanatory है, I'm just reading it for you so that आपका पूरा chapter, मतलब ये एक topic complete हो जाए। That there has been no resumption of cohabitation as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for judicial separation in a proceeding to which they were parties। मतलब कि इनके बीच में इन्होंने JS करा, JS आई होप सबको पता है सेक्शन 10 होता है HMA का, ठीक है। तो इन्होंने JS ले लिया और JS लेने के 1 साल तक कोहैबिटेशन इनका रिज्यूम नहीं हुआ, तो दे कैन फाइल फॉर डिवोर्स, दिस कैन बी अ रीजन, ठीक है। JS के ग्राउंड्स आपके सेक्शन 10 में दिए हैं, वो उन बेसिस पे मिलेगा। उसके बाद सेकेंड ग्राउंड, दैट देयर हैज बीन नो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, सेक्शन 9 बोलता है RCJ के बारे में, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पेटिशन डाली जा सकती है। सपोज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का डिक्री मिल गया था किसी भी पार्टी को, ईदर द हस्बैंड और द वाइफ, as between the parties to the marriage for a period of 1 year or upwards after the passing of a decree for restitution of conjugal rights in a proceeding to which they were parties। मतलब कि RCJ की डिक्री आई और उसके 1 साल तक ओके कोहैबिटेशन नहीं हुआ। RCJ की डिक्री अगर सबको पता है तो RCJ की डिक्री दी ही कोहैबिटेशन के लिए जाती है, राइट, कि 2 लोग कोहैबिट करें एक दूसरे के साथ, इसके लिए RCJ की डिक्री दी जाती है। सो देयर वाज नो कोहैबिटेशन, तो उस केस में भी आप डिवोर्स फाइल कर सकते हो, ठीक है। इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द डायनेमिक पार्ट ऑफ डिवोर्स का, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसपे रिसेंटली एक जजमेंट आया है, 2019 का जजमेंट है ये।
तो हम इसको डिस्कस करेंगे, मुनीश कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़, राइट? We will discuss this. You will understand that how IRB is actually becoming a ground for divorce. Supreme Court has invoked Article 142 to make it a ground of divorce. We do not have any statutory provision with respect to IRB, and hence सुप्रीम कोर्ट ने 142 को इस्तेमाल करके IRB के ग्राउंड पे डिवोर्स दिया, ठीक है? अब इस केस को समझते हैं कि इसमें हुआ क्या था। 2000 में both these people got married. उसके 2 महीने में the wife moved to Canada and she also got Canada का citizenship, ठीक है? But then she came back to India, right? But even after she came back to India, they had a lot of quarrels, okay? बहुत ही मतलब disputes थे. So what happened in this case? Appellant was the husband, ठीक है? तो husband ने क्या किया? He filed a case, divorce का petition, ठीक है? Divorce petition file किया district court में on the ground of cruelty. He said that because of loneliness, okay, he had a lot of उसको काफी hurt, sentimental hurt, मतलब physical, mental. He said मुझे दोनों problems हुए, and so the district court granted him divorce as well, ठीक है? Divorce मिल गया, but the wife went to the high court and high court denied divorce. They said that this is normal wear and tear of life, of a married life, and it's okay if, you know, these things can happen to any marriage and there has to be some tolerance from both the parties. But then the husband, he went to the Supreme Court. He said that I'll go to Supreme Court. Supreme Court में जब arguments हुए, दोनों parties की तरफ से contentions आए, तो Supreme Court ने इसमें ये कहा कि इनका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप has deteriorated to such an extent that it cannot come back to normal. It cannot come back to normal. And उसमें बहुत सारी चीजें थी. Wife ने बहुत सारे blames लगाए, husband ने बहुत सारे blames लगाए कि मेरी consent के बिना she went to Canada. Then wife said कि I had a forced abortion. All these were the things that were discussed in the case that are not relevant for you. But so इनका personal relationship इतना ज़्यादा damaged है that there is no way that they can come back together, and if they come back together it will be a living hell for both of them. So there is no point making them live together. तो इसमें and वही इसमें same चीज थी कि various mediations and conciliations fail हो चुके थे, यही सब grounds होते हैं. And court also said that 16 years से मतलब they've been in this agony and the wife was not ready to actually give the divorce. There was a reason, because she didn't want कि उसके against divorce का petition, divorce का decree आए on the ground of cruelty. So anyway, court did not even accept the ground of cruelty, and उन्होंने IRB के basis पे कि the marriage has broken down irretrievably, which means that it cannot come back to normal state anymore. ठीक है, इस basis पे उन्होंने डिवोर्स दिया. एंड क्योंकि IRB कोई ग्राउंड हमारे स्टैट्यूट बुक में नहीं है, तो दे एक्चुअली इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू ग्रांट डिवोर्स, ठीक है? एंड दिस हैज हैपेंड इन 2019, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट फॉर यू फॉर ऑल द स्टेट्स जहां पे भी हिंदू मैरिज एक्ट आता है, ठीक है? So this is what I wanted to discuss with you. You can go and watch the first video and then watch the second one. Make your notes out of it, okay? And so this is your complete divorce under Hindu law. Fine. So it is completed. Before you leave, do like and share this video if you found it interesting, if you found it informational, and if you think this can be helpful for anybody, do share it.
You can press the bell icon so that you do not miss any notifications, and also please subscribe to the channel. Thank you. I'll see you soon in the next lecture on YouTube.